We can start, Bhaiya. Okay, good. So here we are on 19th March 2023, and we are reading Vyavahaaraatmak Janvaad bilingual version, which is in its draft stage or initial stage. It's still evolving, and we are calling this book Behavior-Centered Conversations. It is one of the 10 books which Babaji Shri Nagraj ji he has written. Four books of darshan, three books of Vaad, and three books of Shastra. So out of the Vaad books, Vyavaharatmak Janvad is what we are studying. And we have completed almost 50 pages of this book. So today on 19th March, we will begin from page 50. So let me straight away go to the page 50 now. 1 second. So here we are. So as we do, we'll just read the previous sentence so that the connectivity is maintained. So where we closed last week was समझदारी का दावा किसी ना किसी विधि से हर मानव करता ही है ना one way or the other all humans make claims of being wise or of having understanding समझदारी का प्रमाण मानवाकांक्षा रूपी अथवा मानव लक्ष्य रूपी समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व ही है evidence of understanding it is the resolution prosperity fearlessness and coexistence which indeed is human aspiration or human goal इसके आधार पर मानव का वैभव धर्म अर्थ और राज्य का संयुक्त रूप में वैभवित होना सहज है on this basis it is natural that the grandeur of humans is in the grandeur of the combined form of धर्म resources and state धर्म अर्थ और राज्य के संयुक्त रूप में ही मानव का वैभव है now Babaji continues with वैभव on the new paragraph वैभव के मूल में समझदारी और जागृति ही अति प्रमुख स्रोत है okay, तो अंडरस्टैंडिंग एंड अवेकनिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज एट द रूट ऑफ ग्रैंड यह सार्थक संवाद के लिए अनुपम मुद्दा है दिस इज एन अमेजिंग पॉइंट ऑफ मीनिंगफुल डायलॉग्स जागृति और समझदारी अविभाज्य है अवेकनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर इनसेपरेबल अविभाज्य inseparable from each other it's understood okay so awakening and understanding are inseparable from each other तो अभी अति प्रमुख मुद्दा है most important source so let us see what how I interpreted वैभव के मूल में समझदारी और जागृति ही अति प्रमुख स्रोत है so वैभव और grandeur in a general sense the general sense which we get from this word is in context of madhyas darshan that there is something good and its continuity is maintained okay in hindi it is being called vaibhav in madhyas darshan so vaibhav translated in english we are using the word grandeur so there is something good which is there either naturally or by human efforts and then if we are able to ensure and maintain its continuity that is grandeur उसे वैभव कह रहे हैं so at the root of grandeur there is understanding and awakening if one is not wise if one has not understood the reality if one is not awakened okay all these words broadly indicate to in the same direction then the grandeur will not be maintained okay so we will lose what we have human which we are seeing nowadays a lot of discussions are happening in media also that we have not understood the value of natural resources so it appears that its continuity will not be there okay we are heading towards disaster so जो मानव का वैभव है हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उसकी निरंतरता मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वी विल नॉट बी able to maintain the grandeur so ये broadly जो है ना ये इसका मतलब है कि सिर्फ विजडम और अवेकनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन इट्स बेसिस ओनली
grandeur can be there. Otherwise, we can have transient phases of good events, good things, good outcomes, but then they will only be transient, they will only be short-lived. Their continuity will not be there. So what do we want? Naturally, as soon as our attention is drawn to this thing, we want the continuity. Even at home also, even in families also, even in countries also, we want that whatever goodness is there, that goodness should remain forever. If we live well within the family, if relationships are good, if the sense of prosperity is there, we always wish that may this thing sustain forever. Okay, my children and their children and their children, they should always be so happy as we are today. So that is grandeur. In the absence of wisdom, in the absence of awakening, in the absence of understanding, uh, maybe the next generation will lose its path, they will deviate from the right path, and then they will not be able to maintain these things, human aspiration, which is being said as resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. This is what we always want, all humans want, and their continuity itself is grandeur. So this is an amazing point of meaningful dialogues, which like I have always felt every day I get that feeling. How come these kind of things, in all our education, in all our upbringing, till the time I reached 50, in so much clear terms, why are these things not mentioned in our environment, in our society, in our families? If we always talk, what is the content of those discussions? So suddenly, Babaji has given us the right direction. And now this is where our own creativity, our own efforts are required, how we can implement in the discussions of which we become part of. So we naturally have those opportunities. So itna jo hai, this I thought I'll just elaborate on how I interpreted these things. समझदारी अपने में ज्ञान विज्ञान विवेक के रूप में कारगर होने की स्थिति चर्चा में आ चुकी है. The fact that understanding in itself is effective as knowledge, science and wisdom has already been discussed. So ये ज्ञान विवेक विज्ञान, ये तीनों शब्द जो है बार बार आते हैं. These three words, they are repeatedly coming in Madhyas Darshan: knowledge, science and wisdom. So now Babaji is saying all this is basically, this is what we are calling understanding. So the fact that understanding in itself is, so if one has the understanding, then in their living it becomes effective as knowledge, science and wisdom. हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, मैं पूछ रही थी कारगर का मतलब क्या होता है? हाँ, कारगर मतलब दीदी वो इम्प्लीमेंट ऐसे होगी, है ना. समझदारी अपने में ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, या मतलब इट बिकम्स इफेक्टिव. तो मैं इसको ऐसे फ्लो में, मुझे इफेक्टिव से ठीक लगा, बट मतलब इफ अनदर वर्ड हेल्प्स, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है, मतलब ऐसा है. ज्ञान विज्ञान विवेक का संयुक्त नाम है समझदारी, है ना. सो सेम थिंग इन अदर वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग इज द कंसोलिडेटेड नेम ऑफ नॉलेज, साइंस एंड विजडम. विवेक और विज्ञान के मूल में ज्ञान ही प्रधान वस्तु है. Knowledge is the main element at the root of wisdom and science. ज्ञान अपने स्वरूप में सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है. Knowledge in itself is sentient and insentient nature saturated in omnipresence, omnipotence. Okay, तो सत्ता जो है ना, सत्ता वर्ड का जो ट्रांसलेशन जो है, इट इज omnipotence, ऐसा करके रखा है. सो सत्ता में भी ना देयर इज समथिंग सुप्रीम, एक ऐसा सेंस आता है, सम काइंड ऑफ ए रूलर इज देयर, जिसकी सत्ता चल रही है. परंपरा में भी सत्ता का कुछ कुछ ऐसा मतलब चलता है ना, जो काफी पावरफुल है. सो omnipotence also gives the same meaning. So someone is powerful enough and it is present everywhere.
ओके, सो उसको जो है वो सत्ता के लिए omnipotence वर्ड जो है वो यूज किया. तो नो, व्हाट इज नॉलेज? So this is something we all of us need to repeatedly check within ourselves also. We need to verify within ourselves also कि मैं भी इन चीजों को धीरे धीरे करके how much of it I am able to naturally and in the normal course of my living, these things are becoming very clear to me. So what is knowledge? Knowledge is that this whole existence is sentient and insentient nature saturated in omnipotence. Is it absolutely clear to me, at least at the logical level in beginning? Okay, and then gradually there will be further progress. But logically, I can very clearly see this whole existence. I can very clearly see means I'm not saying I can very clearly see. This is what we all have to verify in ourselves. Can we very clearly see that when we close our eyes, that in this whole existence there are only two kinds of realities? Okay, actually three kinds of realities. One is the sentient nature. This is one reality. Then there is one is insentient nature. This is the second reality. And both of them are saturated in omnipotence, which is the third reality. इसको ज्ञान कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में. This is being called knowledge. So ये अपने में clear है, stable है. Okay, I do not ever get doubts about this thing. Okay, so इसको जो है अपने में we can all repeatedly verify in ourselves. So as soon as when gradually the way I look at it is that at other places Babaji has mentioned a few other things also which helped in correlating this sentence also, that everything remains in this existence. Nothing goes or nothing can go out of this existence. The sentient nature as well as the insentient nature. Sentient nature is the Jivan part. Insentient nature is the objects made of the physico-chemical objects basically, which are made from the elements which are shown in the periodic table in chemistry. So all those objects, they are insentient nature. Jivan is sentient nature. Animals and humans, they are the combined form of sentient and insentient nature. Material order and plant order, they are exclusively belonging to insentient nature. And all of these nature is saturated in omnipotence. ज्ञान अपने स्वरूप में सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति है. This we can all repeatedly verify in ourselves. And then again, Babaji is mentioning it in Janvaad. The more it becomes clear to it, the more its significance also becomes clear to us. And gradually looking at the people with whom we are talking, we are having discussions with, it is possible for us to appropriately bring these topics into discussions also, in dialogues also. Now, this next sentence is also very interesting when I was reading it last night. ज्ञान होने के लिए ज्ञाता की पहचान होना जरूरी है. I actually feel like highlighting it. ज्ञान होने के लिए ज्ञाता की पहचान होना जरूरी है. To become knowledgeable or to acquire knowledge. I was not sure which is the right phrase. है ना, ज्ञान होने के लिए मतलब मुझ में ज्ञान आ जाए, तो whether to become knowledgeable is the right phrase or to acquire knowledge is the right phrase. So is the right phrase. I was not sure. I used both of them. So to become knowledgeable or to acquire knowledge, it is essential to precisely identify the knower. है ना, तो ज्ञाता शब्द जो हिंदी में है ये है जानने वाला, और ज्ञान जो है ये जानना हो गया. तो
when we say that someone acquires knowledge or someone has knowledge or someone has become knowledgeable, there is someone, that entity who is acquiring knowledge. Okay, so that entity which is acquiring knowledge, that is what is being called here knower. You can actually put it like this so that appropriate emphasis is put here. It is essential to precisely identify the knower. And there and here again Babaji is drawing attention. Jivan indeed is the knower. Okay. In humans are the combined form of body and Jivan. The physical body and brain, all of it is part of body only, and then the Jivan part is the sentient entity. So again, what is being highlighted here is Jivan indeed is the knower. So from different angles, Babaji is giving us clues that, like how these things we can also logically understand, we can also logically verify, and then we can use it as logical arguments or reasoning, or in our discussions, to sort of explain these things. So Jivan indeed is the knower. Brain is not the knower. The body is not the knower. जीवन indeed is the knower. And ज्ञान अपने स्वरूप में जीवन होना पाया जाता है। ज्ञाता अपने स्वरूप में जीवन होना पाया जाता है। जीवन indeed is the knower. जीवन अपने स्वरूप में गठनपूर्ण परमाणु, अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। Jivan is a constitutionally complete atom endowed with inexhaustible strength and inexhaustible power. So अक्षय बल को बोला inexhaustible strength and अक्षय शक्ति को बोला inexhaustible power. Okay, so again, Babaji has drawn attention to the fact that the physical entity, which is body, it also has strength, it also has power, but this get exhausted. That is why after some time we feel exhausted. Okay, body needs rest, body needs sleep. Okay, जीवन, strength and power, that is inexhaustible. ये कभी भी खर्च नहीं होता, जितना भी यूज करें बना ही रहता है. Okay, this is the language Babaji has used. How much soever we may spend it, the strength and power remains as it is. उसको अक्षय बल, अक्षय शक्ति का inexhaustible strength and inexhaustible power. तो गठनपूर्ण परमाणु को कह रहे हैं constitutionally complete atom. And this is it. For the time being, this phrase is being used. We are trying to figure out if there is something better we can find for गठनपूर्ण परमाणु. तो उस पे फ्रीज करेंगे. अभी हम constitutionally complete atom जो कह रहे हैं, whose constitution does not change. So a जीवन परमाणु, what Babaji has proposed is that a Jivan Parmanu, once it takes the form of Jivan Parmanu, its form does not change. Okay, the other atoms which are Gathanshil Parmanu, okay, which are continuing in the process of constitution, their constitution changes. Their electrons from one atom can go to the other atom, and like that kind of electron sharing and those things can happen. All that is Gathanshil Parmanu. But here in Jivan Parmanu, the exchange of electrons does not happen. Okay, that is why it is being called immortal also, because it does not change its form. तो ये जो अक्षय शक्ति, अक्षय बल है, ये क्या है? जो आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य क्षमता है, यही अक्षय शक्ति है. Okay, so the constitutionally complete atom endowed with inexhaustible strength and inexhaustible power, which is endowed with potential to authenticate hope, thought, desire, determination and evidence. तो इसको प्रमाणित करने योग्य क्षमता है. So it has the potential to authenticate hope. तो आशा को होप बोला, विचार को थॉट बोला, इच्छा को डिजायर बोला,
संकल्प को डिटर्मिनेशन बोला और प्रमाण को एविडेंस बोला. दिस इंडीड इज द इनएग्जॉस्टिबल पावर. यही अक्षय शक्ति है. और फिर इसी में साथ में अक्षय बल भी बता दिया. इसी क्रम में अनुभव बल, बोध बल, साक्षात्कार बल, तुलन बल, आस्वादन बल के रूप में परीक्षित हो चुके हैं. In the same order, strengths have been observed as realization strength, both strength, discerning strength, deliberation strength, and taste strength. ये पांचों बल प्रत्येक मानव जीवन में गवाहित होते हैं. These five strengths are witnessed in all human जीवन्स. तो ये थोड़ा सा in this discussion, Babaji has mentioned about जीवन क्रिया also. अभी तक जितनी बात की, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू थिंक वी वांट टू डिस्कस फर्दर? नहीं तो आगे बढ़ते हैं. किसी को लग रहा है कुछ बात करनी है? इफ यू वांट टू डिस्कस ऑन एनी पॉइंट, व्हाट आई वाज थिंकिंग इज we can stop here for a moment and just see in the Jivan Kriya chart how are we using the English words there, so that we all of us gradually get used to the like English vocabulary also for Jivan Kriya. तो वो मैं एक बार अभी शेयर करता हूँ. जस्ट वन मोमेंट. Okay, so this is how normally we make Jivan Kriya with Hindi words. Okay, so I thought we'll just compile them so that in our minds also their placement gradually becomes stable. So at the bottom there is man, and then we have taste and selection. So आस्वादन और चयन क्रिया को इंग्लिश में टेस्ट और सिलेक्शन जो है वो कह रहे हैं. Okay, no, these are the activities. Sorry, what happened? One moment. So these are the 10 activities in awakened Jivan. Okay, so in the middle, these are the activities in these two columns. These are the here Jivan Bal, and here is Jivan Shakti. Okay, so Bal and Shakti, I mean, I'm sure most of us are already aware that what is the difference between strength and power, or which is Bal and Shakti, but I'll just repeat it because I found it difficult in my initial days to figure out what exactly is being meant by Bal or strength and what exactly is being meant by Shakti or power. So in a very elementary kind of example, it is the way I settled it in myself. I sort of understood it in myself is like this. For example, I can pick up a bucket full of water which has a weight of 10 kgs. Okay, so I have a strength to pick up a 10 kgs a bucket which has 10 liters or 10 kgs of water. So this is my strength. And what is power? Power is I actually lift the bucket and do whatever I want to do with it. Maybe take it from one room to the another room, or from the first floor to the ground floor, or whatever. So strength is already there, and as needed I use it in my living. Okay, so when I use it in my living, then it is the power. And even if I am not using it in my living, I still have my strength in me. Okay, just because I am not lifting the bucket at this point of time does not mean that I do not have the strength. Okay, so I have the strength in me. तो बल है ही आवश्यकता अनुसार
शक्ति के रूप में उसको हम यूज कर लेते हैं। तो जब यूज करते हैं तब उसको शक्ति कह रहे हैं, और काफी बार ये यूज करने की जरूरत नहीं रहती, तो बल अपने में बना ही रहता है। Okay, so this is an initial example which helped me in understanding what is being meant by bal and shakti, or strength or power. So man, vritti, chit, buddhi and atma, these five are the jivan bals. They are there. Okay, every jivan, every human, every living person, they he or she or they have this strength. And then in the environment they are in which they are living, in their living, this is what is seen as shakti or power. Okay, so it manifests itself as hope, thought, desire, determination, and evidence. So these are inexhaustible. Okay, it doesn't get spent just because I am using it. So now I am left with less of desire because I have used my desire. It doesn't happen like this. How much soever I may think, how much soever I may desire, okay, how much soever determination I may have, the more I use does not mean that no, I am left with less of that. This is called inexhaustible. अक्षय, जो खर्च नहीं होता। तो मुझे लगा कि ये नाम जो है हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक बार देख लें, so that most of us, like in India, we are familiar with the Hindi terms for this. So now we are doing the translation. So इसको taste और selection कह रहे हैं, तुलन को deliberation कह रहे हैं। Okay, so we spent some time thinking on what is the right word for tulan. So if we see, तुलन in astrology, एक तुला राशि बताते हैं। वो तुला राशि क्या रहता है? एक तराजू सा रहता है, जिसका इंग्लिश में शब्द है लिब्रा। सो इन एस्ट्रोलॉजी इन इंग्लिश देयर आर 12 व्हाट, आई डू नॉट नो। राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Sun signs. Sun signs, okay. Okay. Or Sun signs, constellations, yes. or Zodiac signs. Zodiac Yes. Zodiac signs. Zodiac signs, exactly. Okay, so one of them is Libra. Okay, so Libra is like a weighing scales. Okay, so when we look at the word deliberation, it also at its root has Libra in it. So Libra is the root, is at the root of deliberation. तो हम तुलन भी जो कर रहे हैं अपने अंदर, तो तुलन को भी बाबा जी ने तोलने से ही रिलेट किया है। ओके, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य, इनका तुलन हो रहा है। किसका पलड़ा भारी हो रहा है? विच स्केल इज गेटिंग डाउन, विच स्केल इज गेटिंग लाइटर, उसको कर रहे हैं। तो ये डेलिब्रेशन शब्द ऐसा लगा कि ये तुलन शब्द के साथ में बिल्कुल जो रियलिटी है उसको, उसका भाषाभास जो है वो हमको देता है। तो इसलिए इसमें डेलिब्रेशन शब्द जो है वो तुलन के लिए अभी लेकर के चल रहे हैं। विश्लेषण इज एनालिसिस, चित्रण इज विजुअलाइजेशन, एंड इन दिस बॉक्स वी नॉर्मली राइट साक्षात्कार / चिंतन। तो उसको डिसर्निंग वर्सेस एंड कॉन्टेम्पलेशन ये कह रहे हैं। तो अनुभवगामी विधि में, विच इज द रियलाइजेशन ओरिएंटेड मेथड, उसमें साक्षात्कार है, डिसर्निंग है, एंड फ्रॉम ए रियलाइज्ड पर्सन्स लिविंग इट विल बी कॉन्टेम्पलेशन और चिंतन। ठीक है। देन बुद्धि में बोध और संकल्प होता है। तो इंग्लिश में एट सम प्लेसेस वी यूज द वर्ड बोथ, बट sometimes we are using the word understanding, but at the core we are finding that maybe understanding does not fit everywhere. So for the time being we are continuing to use both itself in English also. ठीक है। संकल्प को कन्विक्शन कह रहे हैं, प्रमाणिकता को ऑथेंटिसिटी कह रहे हैं, और अनुभव को रियलाइजेशन कह रहे हैं। So, ये जो है इस तरह से जीवन क्रिया, मुझे ऐसा लगा बाबा जी ने भी सारे नाम रखे हैं, तो एक बार हम भी अपने में जीवन क्रिया के इंग्लिश वाले शब्द जो हैं उनको भी इसी फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? अदरवाइज विल गो बैक टू द मेन टेक्स्ट।
हैंड रेज भी है शिल्पा दीदी का. हाँ भाई, I was just wanting that if you could recap once again साक्षात्कार. I mean, even I've heard it so many times, but it's good to just recap it. Discerning. If you can just recap it once again. Yes, okay. Sure, Didi, I'll try, whatever I have understood. So what happens is, all of us are trying to become awakened. We are not awakened. Okay, we all concede that, we all agree to this, that yes, we want to reach a level of understanding, reach a level of realization where we are not at this point of time, but we aspire to be there. So in Madhyas Darshan, in Jivan Kriya, Babaji has mentioned that there are two categories of humans: deluded humans and awakened humans. So deluded humans, in them 4.5 activities are active out of these 10 activities. So these 10 activities are 10 activities in awakened Jivan. In deluded human, only 4.5 activities are active. This box here, this is the gateway from delusion to awakening. This is the first box where we spend a lot of time, all of us, okay, on our onward journey, during our onward journey to awakening. Because so far we are living at the level of visualization or deliberation. Mein, out of priya hit labh nyaya dham satya, only priya hit labh is active. Okay, we have some notions of nyaya dham satya, but the absolute clarity is not there. So what Babaji is saying is, in this phase, Sakshatkar Kriya is what happens. Okay, this is where we spend a lot of time to get our clarity about इंद्रिय गोचर सच्चाइयां एंड ज्ञान गोचर सच्चाइयां. 4.5 क्रिया में इंद्रिय गोचर सच्चाइयों की तरफ आदमी का ध्यान बना रहता है. ओके, बट ह्यूमन लिविंग इज प्रीडोमिनेंटली ज्ञान गोचर सच्चाइयों के साथ में है. सो आई विल से इट इन इंग्लिश और आई विल ट्राई टू से इट इन इंग्लिश. Okay, there are realities which are perceptible by senses, and there are realities which can only be which are perceptible only by mind. We cannot see those realities, we cannot touch those realities, but still they are realities. Okay, only our mind can figure them out. They do not have a physical chemical form, but still they are realities. Okay, so discerning is our initial steps of discerning between the physico-chemical realities and non-physico-chemical realities. Okay, this is how the word discerning is being used. Okay, we are able to discern very clearly in our living. Okay, in the initial stages it will not be very clear, but we will have a very gradually we will be able to see in our living from morning to evening, okay, in our day-to-day living, that yes, now I can see there are some realities which are physico-chemical realities and some which are non-physico-chemical realities. And once I realize that there are some non-physico-chemical realities, I want to understand them also. I start focusing on them. I start thinking about them. I okay, okay. I'm sort of looking out for examples of them. All this is happening in the discerning activity, discerning of physico-chemical activities and non-physico-chemical activities. In 4.5 activities, only physico-chemical activities are the focus is on them only. But we are also constantly trying to think about the non-physical also, no? So why is that not there? Like, why is it just 4.5? I mean, discerning is not there. Chit mein. Like, why are we only 4.5? Yeah, so just see, Didi, when I look back at myself, in my journey, the best example is when we explore ourselves in our journey. Like there is something right or wrong. All of us agree to that.
Okay. And when I'm living in relationships in my family also, like everyone agrees, yes, there is something right, something wrong. Do we always agree on what is right and what is wrong? We do not agree. That is the main reason we have conflicts in relationships also. I think something is right, okay, and the person with whom I am living thinks that something quite opposite to what I think is right. So what he or she thinks is right, I think it wrong. I think it is wrong. And what I think is right, the other person thinks it is wrong. That is why conflicts start. Okay. So we have our notions of right and wrong, but we do not know what is right. Okay. We are not able to talk about it. We are not able to communicate it. Okay. यहाँ पर सारा का सारा problem आता है. And sometimes I myself also get confused. I mean, there have been enough examples in my personal life when even I was not very clear about, yaar, whether it will be right this way or this way, whether to tell this thing to the other person or not to tell, or how much to tell. Okay, there are inner conflicts. We want to be transparent also. We do not want to be hiding things. Okay, but then there are situations when we think that if we do not hide and we be 100% transparent, then things will actually become worse. Do I only face these things, or all of us have faced such situations? All of us face. Okay. So you mean once we know what is right, that is sakshatkar or discerning? Yeah, so this is one example I am giving. Okay, now it is not enough only for me to know what is right. Okay, then suddenly we realize that my child also should know what is right. My spouse also should know what is right and wrong. My brothers and sisters, my friends, they also should know what, because they are the people with whom I am living. Okay, so, so as a society, we have to be clear about what is right or what is wrong. Okay, so right or wrong is one gross example of discernment. So ये न्याय धर्म सत्य में न्याय और अन्याय क्या होता है? Okay, so when we are talking about justice, there is something which is justice, there is something which is injustice. So what is the dividing line between justice and injustice? What is the dividing line between dharma and adharma? What is the dividing line between satya and asatya, which is truth and untruth? ये सारी हमारी क्लियरिटी बने धीरे धीरे. Okay, all this starts happening at discerning level. We are able to discern between dharma and adharma, न्याय and अन्याय, and सत्य and असत्य. इसी से ही फिर सही गलत जाकर के सेटल होता है. So in our journey towards awakening, when we are going towards awakening, then this activity is called sakshatkar. Okay, so sakshatkar is I am able to see very clearly. तो हिंदी में अगर संधि विच्छेद करें तो साक्षात प्लस आकार निकल कर आता है दीदी. ठीक है, तो साक्षात प्लस आकार का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से मैं फिजिको केमिकल एंटिटीज को आकार रूप में देख पाता हूं, धीरे से मैं नॉन फिजिकल केमिकल एंटिटीज को भी उतना ही क्लियरली देख पाता हूं. मुझे लगता है ये भी मुझे दिख ही गया साक्षात आकार रूप में. मुझे न्याय अन्याय, धर्म धर्म, सत्य असत्य, सही गलत, ये सब कुछ जो है वो पता चला. तो शुरू में हम वन बाय वन इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, और बाबा जी ने कहा ही है कि न्याय में मूल्य है ना, तो अस्तित्व में 30 मूल्य हैं. तो यहाँ पे साक्षात्कार में स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में व्हाट आई सी इज देयर आर 30 वैल्यूज विच आर नॉन फिजिको केमिकल. Okay, all values are non-physico-chemical, and so we have to understand them and see whether in our interactions with in our relationships we are living based on values, or we are more living based on the physical basis. Okay, so for that, a clear understanding of values has to be developed. Okay, a human being is not only body. This clarity has to be developed. Okay, because Jivan in itself is also a non-physico-chemical entity. आंखों से दिखता नहीं है. We cannot see it with our eyes. We cannot touch it. But Jivan is a reality.
है ना। तो वी कैन से कि जीवन का भी धीरे धीरे करके साक्षात्कार होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। जितने अच्छे से मैं समझ पाऊंगा, with that much clarity I'll be able to bring out in discussions also, I'll be able to communicate it also. तो ये सब साक्षात्कार में होने वाला काम है। तो ये साक्षात्कार से शुरू होगा, तो फिर बोध में जाके इवेंचुअली जो है वो कह रहे हैं कि सही गलत का, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, इन सब का बोध जो है वो उधर होगा। तो शुरुआत यहां से होगी। जी भैया, वेरी नाइस, थैंक यू। Anyone else? Any questions, please? ठीक है, so we go to back to the main text. So in the meantime I see के बढ़िया है, गणेश भाई हैं, वंदना दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया, शैलेंद्र भैया ने भी, राजेश जी ने भी, इंदु जी ने भी, सभी का स्वागत है। बढ़िया। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने 5 पावर्स एंड 5 स्ट्रेंथ्स जो है, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल, दे आर इन जीवन। इतनी बात जो है बाबा जी ने यहाँ पर की। ऑल ऑफ अस नाउ नीड टू सी कि हाउ मच ऑफ इट we find important enough to be clear about, are we clear about, are gradually we find ourselves in situations that we can bring up bring these topics in discussions, and then if there are any supplementary questions from the other party, we are able to handle it or not. This is what gradually we have to see in ourselves. आस्वादन ज्ञान मूलक विधि से संबंधों में निहित मूल्यों और मूल्यांकन के रूप में फलतः परस्पर तृप्ति के रूप में आना चाहिए, शायद यहाँ पे रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। यह सब अपने अपने में गवाहित है। In the knowledge rooted way, tasting is evidenced in the form of mutual satisfaction resulting from values inherent in relationships and the evaluation thereof. All this is verifiable by all humans in themselves. Okay, तो ये भी बाबा जी ने इतने शब्दों में नहीं बोला है, but what he is saying is, he has mentioned it in so many other books before this, that probably he decided not to mention it in so many words, कि भ्रमित मानव जो है वो आस्वादन जो है वो 4.5 क्रिया में प्रिय हित लाभ के आधार पर करता है। तो deluded human, when he or she when we look at the tasting activity in a deluded jivan, that is mostly dependent on physicochemical entities, और वो प्रिय हित लाभ, like dislike, health, or the opposite thereof, and प्रिय हित लाभ, profit and unprofit or loss. On that basis the living is happening. Okay, on that basis all the aswadan is happening. Okay, now in a realized person, when they are living, so for in them the aswadan, the predominant thing that is happening in aswadan is मूल्यों का आस्वादन। Okay, we all live in relationships, so we start feeling it when our attention is drawn to this aspect, that we feel happier if the people with whom we are living, they are happy, and by their living we also feel happy. So if there is mutual happiness, this is the biggest happiness we get. प्रिय हित लाभ में जीते हुए काफी बारी मैं सुखी होता हूं तो दूसरा दुखी होता है, दूसरा सुखी होता है तो मैं दुखी होता हूं, कि इसमें संतुष्टि नहीं मिलती है। Okay, in our day-to-day living in the state of delusion, there are many situations from morning to evening we can see when the other person is trying to be happy, I become unhappy as a result, and when in my effort to become happy, I cause unhappiness to the other person. Okay, that is why a lot of conflicts happen in relationships in families. Okay, but there is a way in which we can look at those aspects where mutual happiness
is there. Not only those aspects, basically that is the goal. Okay, that we actually want mutual happiness. We do not want a situation in which I become happy and my spouse becomes unhappy, or and if my spouse is trying to be happy, as a result of which I am becoming unhappy, then also I have grudges and sometimes I can complain also. So in relationships, these things are happening. So what is the way of living in which there can be mutual happiness that can be derived, that can be obtained? Okay, so once we get a taste of that, then we get, actually this is the real tasting. Okay. Getting happiness from physical facilities is a very small part of our living. This is the true happiness. So in the knowledge rooted way, tasting is evidenced in the form of mutual satisfaction resulting from values inherent in relationships and the evaluation thereof. All this is verifiable by all humans in themselves. All of us can verify it in our living. आस्वादन की क्षमता निरंतर बनी ही रहती है ना? No, Babaji talked about this akshay bal, akshay shakti, okay, which is like inexhaustible strength and inexhaustible power. Now Babaji is highlighting कि now we can see आस्वादन की क्षमता निरंतर बनी ही रहती है. The capacity to taste always remains as it is. ये कम नहीं होती है ना? It doesn't get reduced, it doesn't get exhausted. That is why it is being called inexhaustible. Okay, तो आस्वादन जो है, आस्वादन is on the strength side. So ये जो है आस्वादन की क्षमता जो है, so this is the capacity to taste always remains as it is. इसी प्रकार साक्षात्कार, बोध, अनुभव में भी निरंतरता का होना देखा गया. In a similar manner, ceaselessness in discernment, साक्षात्कार को discernment बोला, बोध और अनुभव, तो डिसर्नमेंट, बोध एंड रियलाइजेशन टू हैज बीन सीन. तो ये भी एक सीजलेस है ना? इसमें निरंतरता है, इसमें कमी नहीं आती है, रुकावट नहीं आती है, ये इट डजंट गेट स्टॉप. मूलतः अनुभव सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में संपन्न होता है. बेसिकली रियलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड इन द एग्जिस्टेंस which is in the form of coexistence. सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व, तो existence which is in the form of coexistence. इसलिए सह अस्तित्व को परम सत्य के रूप में पहचाना गया. It is for this reason that coexistence is recognized as the ultimate truth. परम सत्य को कह रहे हैं ultimate truth. इसकी निरंतरता अर्थात अनुभव की निरंतरता सदा बनी ही रहती है. सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है ही. Its continuity, that is continuity of realization, always remains as it is. Existence is in the form of coexistence. Existence in the form of coexistence in any case is ever present. So realization is also ever present and existence is also ever present. So realization is in human, existence as coexistence is as it is. So there is a continuity of realization and there is a continuity of existence. इस चीज को बता रहे हैं. इसे हर व्यक्ति सार्थक संवाद से बोध तक सार्थक होना संभव है. It can be understood by everyone through meaningful dialogues. यह प्रक्रिया मानव में से के लिए परम आवश्यक है. This process is of utmost importance in, by, for humans. Because it's of utmost importance in humans. It's an important thing to be done by humans. It's an important thing to be done for humans. प्रक्रिया मानव में से के लिए परम आवश्यक है. This process is of utmost importance in, by, for humans. इसको जो है ऐसे बोला. So now we go to the next paragraph. यहाँ से any questions so far? Yeah, if like I always say that it will be good to hear from you also.
And many times I feel that I'm just giving this session becomes a one-way lecture, which I never want it to happen. So I will love sharing from you also, not only now, but always. Please, anyone. Actually, भैया वो एक funny वाला कुछ याद आ गया वो आप when you were discussing about um, being unhappy because of other people's happiness, वो शायद लोग relate कर पाएंगे सब, जब पहले बहुत लाइट जाती थी तो उस टाइम पर मतलब मेरे घर की लाइट गई है वो एक दुख है, बट किसी पड़ोसी की लाइट है तो वो उससे बड़ा दुख है कि ये तो ठीक है Okay. चलो बट इनकी क्यों है तो Uh, वही बड़ा हल्ला हो जाता था. So yeah, so it's quite relatable. ठीक है, ठीक है. Yes, Shilpa Didi, you raised hand, and I Yeah, I think was Spencer asking also like, turned on video, so maybe he also wants to say something. पहले आप बोलिए I शिल्पा. was just thinking that like we are talking about Jivan and that it is inexhaustible, the strength and the power, but the body's strength and power is exhaustible, na? Like that is limited because it is Jad. So, but how does it transcend? Like somebody is very weak and yet, you know, because of the Jivan being powerful, they're able to do certain things. So I was just thinking like, you know, how does it work? Like, because that is limited, no? The body is limited, but the Jivan is unlimited. I missed out something, Didi. दोबारा से बोलिए, please. I was just asking that, like we were discussing that Jivan's Bal and Shakti, the power and the strength is inexhaustible, but it exists in the human body. So the body's is limited, na? Like it is not, it is exhaustible. It is not inexhaustible, the body. But like Yes. in certain situations, we are able to transcend it. Like somebody who is very weak is able to do like a lot of work because of the strength of the Jivan's power, because of the influence. So how does it work? Like, you know, I was just thinking because it So is. up, yeah, I think I understand what you are saying. कि ये जो जीवन की powers and strength है, like are they in some way limited by the strength and power of body? इसको दीदी, you know, there are no answers which I can give, but only thing I can tell you is to verify it in our day-to-day living. Okay. So when I look at it, I realize that it is Jivan which is using the body. I have seen it in numerous instances in my living when, you know, the day is going on normally, and at some point during the day or sometime in the evening, I feel that I'm getting tired and I want to take rest. Okay. And suddenly some major event happens. Okay. Major event which needs me somewhere or in some capacity. Okay. So Jivan decides that, see, the body needed rest till a few moments ago, but suddenly something has happened. So now you have to garner all the strength that you have, and let us do what we have to do. ठीक है. So body support भी करती है. I am sure this has happened with all of us. हम सब ने कहीं ना कहीं पे ऐसा देखा ही होगा. Normally we want to sleep, you know, after a hard day's work at, let's say, 10 p.m. in the night, but suddenly someday in the evening some emergency is there and we have to we do not get any sleep during that night. You know, we are able to keep awake also. Okay, so how come the body which wanted to take rest is suddenly able to work without rest also? है ना? ये अपने से ही, you know, when we verify it in ourselves, we get the answers. Yes, Bhaiya, very well said. Thank you. Okay. Yes. Yes. Anyone else? Spencer, anything? No, actually, I don't have anything to say. I just turn on my camera just to get some visual feedback, Okay. but no, Okay. no comments right now.
It's going good. Okay. Okay. Anyone else? हाँ भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते शैलेंद्र भाई। अच्छा, मैं कई दिनों से पहले एक शब्द बताने ध्यान में आ गया, ये मैं कुछ ऐसे ही कंटिन्यूटी पे ध्यान जा रहा है कई दिनों से कि जीवन अमर है। तो मैंने एक शब्द एक मुहावरा आता है हमारे यहाँ, काल के गाल में चले जाना, ओके। है ना। तो काल के गाल का मतलब मैं ऐसे समझ रहा था कि ऐसे पहले से भी ये बात तय है कि वो कंटिन्यू ही है, मतलब काल मतलब टाइम में चला गया वो जीवन। हम्म। हाँ, मतलब अभी जो ये यहाँ इस शरीर के साथ में था वो भी वापस काल में है, मतलब लेकिन है। इसको कहीं मैं रिलेशन देने की कोशिश कर रहा था अपने आप में। ठीक है। तो ये जो अभी ठीक है, दीदी कह पर रही थी ना, मतलब ऐसे बात चलती है दर्शन में बार बार, मतलब कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, ये लगता है मतलब ऐसे सेट सेट करने की बात कर रहा था मैं अपने आप में। हम्म। हम्म। तो हाँ, जो तो अक्षय बल, भैया, अक्षय ऊर्जा जो चल रही है हाँ बात यहाँ पर अभी, हाँ जी। है ना, ये मेरे को ऐसे ही सिमिलर लगती है, मतलब। हम्म। ठीक है भैया, हम सब इसके बारे में अपना अपना जो सोच विचार है उसको बनाए रखें और अलग अलग तरीके से देखें। ये काल में चला गया, या जैसे कभी हम ना, जैसे डेथ वगैरह की भी बात करते हैं, अपने आसपास हम सब ने देखा ही है कभी ना कभी किसी का, परिवारों में, मित्रों में शरीर शांत होते हुए। Okay, and sometimes it becomes difficult to accept death also, more so if it happens to some near and dear one, and more so if it is untimely. लेकिन धीरे से ना मेरा ध्यान इस तरफ गया भैया कि अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस आया था ना कि एग्जिस्टेंस जो है ना, एग्जिस्टेंस में क्या है, सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट नेचर सेचुरेटेड इन omnipotence। ठीक है, यही है परम सत्य। इसके बारे में जितना मैंने सोचा, मेरे को अपने में काफी रिलैक्स लगा भैया कि शरीर जो है, द बॉडी, द फिजिकल बॉडी, आवर बॉडी, इट गेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम मेनी many minerals and atoms and chemicals. Okay, and eventually at some point when we say the person has died, the body gets merged back with the basic elements. Okay, so the body was made from insentient nature and it merges back in the insentient nature. This insentient nature is in the existence only. Similarly, the Jivan is there in existence only. जीवन भी जो है ये अस्तित्व में ही है. Sometimes it is with body and sometimes it is without body. Okay, so when it is with body, it is still in existence. When it is without body, it is still in existence. So nothing goes or comes. Okay, Jivan is there in existence. Sometimes it is driving a body and sometimes it is not driving a body. तो सब कुछ अस्तित्व में है. ठीक है, हम सब अलग अलग समय में अलग अलग शरीर चलाते हैं. We drive different bodies, at different times. In 21st century, in 2023, today we are driving these bodies, but some other body, and in the intervening period, there will be some time when we will not be driving some body, but the Jivan still remains in existence. ठीक है, मैं इसको जब इस तरह से देखता हूं तो ऐसा लगता है कि भैया ये सारे ही जीवन जो है ना, ये एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है. सब जीवन का संबंध है. इस शरीर यात्रा में, in this life journey, there are some people with whom I am having interactions, but in the previous life cycle or in the next life cycle, some other people, some other jivans who will be my relatives. So eventually everyone is related to me. तो धीरे धीरे करके जितना हम ये परम सत्य जो बोला, अल्टीमेट ट्रुथ बोला, insentient nature and sentient nature, है ना, जड़ प्रकृति
और चैतन्य प्रकृति ये सत्ता में संपृक्त है, ये परम सत्य है। सो सेंटिएंट नेचर एंड इनसेंटिएंट नेचर आर सैचुरेटेड इन omnipotence, है ना। ये जो है ये अपने में परम सत्य है। इसके ऊपर हम सोचते हैं तो सोच के मेरे को ऐसा लगता है कि अपने आप ही वो नेक्स्ट स्टेजेस आएंगे जिसमें क्लियरिटी बनेगी और जिससे अपने में स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। हाँ जी भैया, मतलब जब जब ऐसा कुछ जीने की कोशिश में चल रही होती है गाड़ी और कुछ दिक्कत आ रही होती है, मतलब तब मालूम पड़ता है कि इसको मैंने ऑल डायमेंशन में नहीं देख पाया बात को, समग्रता में, इसलिए ये मैं इसको नहीं ठीक से कर पाया। मतलब इसका दूसरे ऑप्शन भी थे या है, बस सही करा। ठीक है, जैसे जैसे ध्यान जा रहा है वैसे वैसे बात बढ़ रही है। बढ़िया। भैया अभी जो जैसे शैलेंद्र भैया ने बोला आपने कि काल में हम लोग हैं, तो ऐसा लगता है ना कि काल तो हमने मतलब एक टाइम को ही बोला ना, और टाइम तो एक तरीके से हम अब टाइम को कैसे देखते हैं, टाइम तो इज लाइक कि धरती सूरज के कितने और चक्कर लगा रही है, तो वो एक एक मापने के लिए कुछ हो गया, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, ऐसे ही टाइम भी है। तो हम काल में कैसे हो सकते हैं? यदि देखिए अब काल में बोला ये शैलेंद्र भाई ने कुछ परंपरा की कुछ अच्छा। बोलते हैं वो बोला, मतलब मैं नहीं बोला उसको, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, है ना। हम लोग तो जी मध्यस्थ दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है उस पर चल रहे हैं, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं हम इसको जो फिर हमने परंपरा में सुना हुआ है उससे कुछ ना कुछ हम रिलेट करने की कोशिश करते ही रहते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं पे पहुंचेंगे। जो शैलेंद्र भाई ने बोला, मैं सच बताऊं मैंने वो वाला सेंटेंस आज तक पहले कभी सुना नहीं था, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी परंपरा में वो वाला सेंटेंस बोलते होंगे, उसका कुछ मतलब होगा, है ना। लेकिन जन्म और मृत्यु होती है इतना हम सब ने देखा ही है, और उससे रिलेटेड हमारे कुछ प्रश्न रहते हैं। मैंने फिर अपनी तरफ से उसको मैं जैसे देखता हूँ मैंने वैसा रखा दीदी। जी भैया जी। मैं भी ना सुन के ऐसे लगा था पहले की बात, मतलब काल वाली या मैसेज, तो बहुत ऐसे लगा था कि अरे बहुत सोचने वाली चीज है। तो फिर एकदम से ऐसे गया कि काल हम लोग जो मध्यस्थ दर्शन में है, बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि हम टाइम को बोल रहे हैं, और टाइम में एक मापने वाला है। एकदम से ना मैं ऐसे हो गई थी, क्या सच में ऐसा चल रहा है कि हम काल में हैं? मतलब ऐसे ही वो उस तरफ से सोचना शुरू कर दिया था मैंने, तो एकदम से फिर दूसरी तरफ से निकला कि काल तो सिर्फ मापने के लिए है ना, टाइम है ना, तो क्रिया की इसलिए अवधि, अभी पिछली बार हमने पढ़ा था जी जी क्रिया जी। की अवधि बराबर काल, काल। जी है ना। क्रिया मतलब कोई भी जो क्रिया है उसको काल कह रहे हैं। तो लाइक लाइक एक क्रिया है कि शरीर का बनना, और फिर एक क्रिया है शरीर का विरचित होना, है ना। द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, द जनरेशन ऑफ द बॉडी जिसको हम बर्थ कहते हैं, और फिर डीकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी और डीजनरेशन ऑफ द बॉडी जिसको हम डेथ कहते हैं। तो अभी काल क्या हो गया, ये अवधि क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज द एंडिंग पॉइंट। तो ये एक बीच में एक अवधि आ गई, एक ड्यूरेशन आ गई, इसको भी एक टाइम के रूप में, आदमी की आयु के रूप में हम इसको देख पाते हैं, एज ऑफ ए पर्सन। तो जी मतलब ना ये इस तरीके से आपने जैसे धरती वाला एग्जांपल दिया वो भी ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सत्य में अनुभूत होना, अनुभव सहज प्रमाणों को प्रमाणित करना ही जागृति है, यही परम सत्य है। टू बी रियलाइज्ड इन ट्रुथ, टू ऑथेंटिकेट द एविडेंस ऑफ रियलाइजेशन इंडीड इज अवेकनिंग। ओके, दिस इटसेल्फ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। तो सत्य में अनुभूत होना, टू बी रियलाइज्ड इन ट्रुथ, और इन प्रमाणों को प्रमाणित करना, एंड टू ऑथेंटिकेट द एविडेंस। तो प्रमाणित करना मतलब जीने में आना, दूसरों तक भी पहुंच जाइए, वैसा जो है वो हो जाना, इसको जो कह रहे हैं यही जागृति है। सत्य की परिकल्पना कल्पना मानव सुदूर विगत से करता ही आया है। सत्य की कल्पना शाश्वत सुंदर कल्याण रूप में की गई। Humans have imagined, envisioned, and tried to understand the truth since times immemorial, है ना। तो इसको क्या, सत्य की परिकल्पना कल्पना मानव सुदूर विगत से करता ही आया है। Humans have imagined, envisioned, and tried to understand the truth since times immemorial. सत्य की कल्पना शाश्वत
सुंदर कल्याण रूप में की गई. Truth has been imagined as something eternal, beautiful and wholesome. Okay, so truth is something which is good. मतलब ऐसा एक सेंस जो है वो in all religions, in all geographies, by all great people it has been said. तो शाश्वत को कह रहे हैं इटर्नल, सुंदर जो है वो ब्यूटीफुल हो गया, और कल्याण रूप में की गई. कल्याण को अभी मैं होलसम लेके चल रहा हूं, मतलब लाइक सबके सुख के लिए, सबके लिए ठीक है, इसको होलसम. So truth has been imagined as something eternal, beautiful and wholesome. कल्याण का तात्पर्य दुख, क्लेश व भ्रम मुक्ति है. Meaning of wholesome is liberation from sorrows, distress and delusion. दुख, क्लेश व भ्रम, sorrows, distress and delusion, इससे मुक्ति है, liberation from. सत्य की परिकल्पना दिया कि सत्य शिव सुंदर, शाश्वत है, कल्याणकारी है और ज्ञान है. ये बाबा जी बता रहे हैं कि परिकल्पना के रूप में परंपरा में ऐसा बोला है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरह की बातें भी जो है हमने परंपरा में सुनी ही है. तो दे एनविजन, दे मीन्स इन अवर ट्रेडिशन, अवर प्रीवियस जनरेशंस, द ग्रेट पीपल, दे एनविजन ट्रुथ एज गॉड, है ना. सत्य को शिव, शिव को मैं अभी यहाँ पर गॉड लेके चल रहा हूं विद ए स्मॉल जी. सुंदर जो है उसको ब्यूटीफुल कह रहे हैं, शाश्वत जो है वो इटर्नल है, और कल्याणकारी जो है वो होलसम है, ज्ञान जो है वो नॉलेज है. सो दे एनविजन्ड ट्रुथ एज गॉड, ब्यूटीफुल, इटर्नल, होलसम एंड नॉलेज. सो ट्रुथ, न्याय, धर्म, सत्य, ये जो है वो तुलन में ये वाली चीज मिसिंग थी. तो बाबा जी यहाँ पर इसको थोड़ा जा ट्रुथ के बारे में बता रहे हैं कि ट्रुथ हैज बीन कन्वेड एज समथिंग विच इज गुड, something which relates to God, something which is wholesome, something which is knowledge. This everywhere we hear these kind of things. सत्य से ही दुख मुक्ति होने की चर्चा है. It is said that truth indeed provides freedom from sorrows. Okay, I think in the previous or previous to previous sessions there was a sentence which came which was something like lack of knowledge itself is at the root of all miseries. अज्ञान ही दुख का मूल कारण है. कुछ इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है. अज्ञान ही दुख का मूल कारण है, ये पहले बोल चुके हैं. उसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, सत्य से ही दुख मुक्ति होने की चर्चा है, ज्ञान से ही दुख मुक्ति होने की चर्चा है. So it is said that truth indeed provides freedom from sorrows. अब बाबा जी अपने में इसका समीक्षा कर रहे हैं, इसका क्रिटिक दे रहे हैं थोड़ा सा, कि सत्य क्या है पूछने पर मन वाणी से अगोचर बता दिया, इसीलिए सत्य और ज्ञान को रहस्यमयी वस्तु मानते ही आए. When asked what is truth, okay, when asked means what Babaji is saying is when anyone has asked in the history, there have been people who asked in history, and Babaji has quoted also कि इसके लिए फिर आंसर क्या है. So when asked what is truth, the tradition gave the answer, or they said it is beyond the reach of mind or speech. Okay, ये मन वाणी से अगोचर है. अगोचर मतलब इसकी पकड़ में नहीं आता है, ना मन की पकड़ में आता है, ना शब्दों की पकड़ में आता है. Okay, so it cannot be perceived by mind, and it cannot be sort of expressed or communicated by speech also. So it is beyond the reach of mind or speech. Okay, बता दिया, इसीलिए सत्य और ज्ञान को रहस्यमयी वस्तु मानते आए. Truth and knowledge thus came to be known as something mysterious. So the contradiction or the gap which Babaji is drawing is here, drawing our attention to is that it has been abundantly mentioned that truth is something very beautiful, something eternal, something wholesome. Okay, it is related to God also. And then, then all of us want all these things. So when we want these things, or we want to go deeper in this, whenever someone asked these questions, so they have been told that it is beyond the reach of mind and speech.
Okay, so Babaji is saying that this is a very, I mean, I think what Babaji is trying to convey here is this is something which is, the seekers may find themselves at a dead end at this point of time. We raise their hopes that truth is something very good, and when they want to achieve it, then we communicate to them that it is unachievable. This is beyond the reach of mind or speech. Okay, so this can be a disappointment to the seeker of truth. Okay, and naturally, what happened then is truth and knowledge thus came to be known as something mysterious. Okay, this is good, but we cannot talk about it. We cannot feel it. It is beyond the reach of mind and speech. And what it is, then it is becomes shrouded in mystery. This is what has happened in the past. रहस्यमयी मान्यता के आधार पर सत्य धर्म वादग्रस्त होता रहा. Due to mystery-based beliefs, disputes continued unabated about truth and religion. है ना? सत्य धर्म वादग्रस्त होता रहा. Disputes continued unabated about truth and religion. धर्म के संबंध में धर्म के लक्षणों को बताकर उद्देश्य का आधार बताया. As far as religion is concerned, they highlighted the indications of religion and associated human goal with that. है ना? तो धर्म क्या है ये नहीं बता पाए या ये नहीं बताया, धर्म के लक्षण बताया कि आदमी धार्मिक होगा तो ऐसे जिएगा. तो ऐसे जिएगा इज ए लक्षण पार्ट. ओके, वो उसका जो कोर में जो पार्ट था वो छूट गया उसमें. रहस्य से मुक्ति मानव की अपेक्षा बनी रही. However, expectation to get liberation from mystery remained in humans. And this is natural also. सत्य धर्म न्याय की अपेक्षा मानव परंपरा में बनी ही रही, भले ही चिन्हित रूप में स्पष्ट नहीं हो पाई. Although not precisely understood in human tradition, the expectation of truth, dharma and justice has always been there. है ना? कुछ न्याय होता है, कुछ धर्म होता है, कुछ सत्य असत्य होता है. इसकी स्पष्टता नहीं बनी है. बिल्कुल ब्रीफ में जब मैं सोचता हूं तो अपने में ये पाता हूं कि सही गलत कुछ होता है, ये हम कुछ मानते हैं. सही गलत क्या है ये पता चल जाए, मुझे पता चल जाए, सबको पता चल जाए, है ना? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एवरीवन, एंड आई शुड बिकम अवेयर ऑफ दैट. दिस एस्पिरेशन इज आल्सो देयर, but it has not been precisely understood in human tradition. This also is a reality. This also is a gap. न्यायालयों में भी चिन्हित नहीं हो पाया. Okay? Justice could not be precisely identified even in the courts. So courts also claim all over the world at all times that they deliver justice, but even courts have been unable to precisely identify what is justice. अंततो गत्वा फैसले को न्याय अभी तक हम मानव मानते चले आए हैं. As a result, till today, humans assume that the decision of the court is justice. तो ये वाला पैराग्राफ हो गया. आई थिंक ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं. Unless there are any questions so far, please. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पेज 51, पैरा 2 फ्रॉम द हिंदी बुक. मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के नजरिए में हम मानव इस सडनली आई रिमेम्बर, ये पीछे ना एक अगोचर शब्द आया था इस वाले पैराग्राफ में. कहाँ पर है ये रहा, है ना? सत्य क्या है पूछने पर वाणी से मन से अगोचर बता दिया. When I had heard this word, but it is only after doing Jivan Vidya Shivir and after reading these Madhyas Darshan books, thinking about them, that I started looking at our prayers also. कि भाई हम लोग जो है ना दिवाली वगैरह पे और ये सब घर में कहीं ना कहीं पूजा पाठ परंपरागत रूप में हम सब में घरों में होता ही होगा, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ, है ना? हमारे घर में भी होता ही है. तो मेरा ध्यान गया कि परंपरा में भी ना ये गोचर अगोचर शब्द जो है ये कभी कभी ईश्वर के साथ में आता है
और ये अगोचर वर्ड के साथ में ही ईश्वर शब्द को एसोसिएट करते हैं। मैं इसको एक इसमें आरती में मेरे को याद आ रहा है, अभी अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आप में से भी किसी को तुम याद आ रहा हो हो? एक अगोचर सबके प्राणपति, हम्म, जय पति, बस जगदीश्वरी। बस एग्जैक्टली। तो ये दिवाली पे जो है ना, ये वाला आरती जो है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, है ना। तो अभी हम परंपरा में भी ना यही देखिए, मतलब ये हो क्या रहा है, एक बार हमारा ध्यान जाता है तो हम अपने सारी चीजों को बारीकी से देख पाते हैं। तो यही मैसेजिंग हो रही है कि भैया तुम सबके प्राणपति हो। प्राणपति हो मतलब सबके रक्षक हो, है ना, सबका ध्यान रखने वाले हो, कोई सुप्रीम चीज हो, लेकिन तुम अगोचर हो, तुम हो क्या ये नहीं पता चल, है ना। यही बाबा जी कह रहे हैं कि मतलब ईश्वर को एक 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 अच्छी अच्छी अब चीज भी क्या कहें, मतलब वो उसका कुछ वो शब्द भी नहीं बनता कि ईश्वर एक अच्छी रियलिटी है, ऐसा पता चलता है ना। वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ज्ञान है, सही है, ये सब कुछ पता चलता है, लेकिन है क्या, अगोचर है। तो ये हम ये अब घरों में ना ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। मतलब आई यूज्ड इट वेरी वेरी frequently in my home in discussions, because prayer everyone is aware of, prayer, this aarti everyone is doing it। तो ये अगोचर शब्द हर आदमी साल में कई बार बोल ही रहा है, सुन ही रहा है, ठीक है। तो अब ईश्वर अगोचर है, ये एक मैसेजिंग आती है, और ईश्वर एक बढ़िया चीज है, ये भी एक मैसेजिंग आती है। तो ये ईश्वर समझना चाहिए कि नहीं चाहिए, हम समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो ही ये बता रहे हैं कि तुम इसको समझ भी नहीं पाओगे, तो हमारा ही रास्ता भी बंद हो गया। Right. So this is where what the Babaji is highlighting as the contradiction, as the dead ends as far as the tradition is concerned। ठीक है। तो ये अगोचर शब्द जो है मेरा धीरे से जो है वो ध्यान गया। तो व्हाट आई एम रिपीटेडली सेइंग इस पूरे को पढ़ते हुए ना, बाबा जी ट्रेडिशन में क्या हो रहा है, बाबा जी इज हाईलाइटिंग ए लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन रियल लाइफ, and then what is that we aspire to be, and then what are the gaps there. So we can find clues from here which could be the starting point for dialogues in which we engage in, which we can handle, which we can tackle। ऐसा मेरे को यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के नजरिए में हम मानव इस तथ्य को चिन्हित रूप में समझ सकते हैं। With the lens of Madhyast Darshan coexistentialism, we humans can precisely understand all this। मानव परंपरा में और नैसर्गिक प्राकृतिक परंपरा में अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। We can apply it very well in human tradition and with the rest of the nature। प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाणित होना ही मानव परंपरा का सम्मान है। We can evidence it, evidencing indeed is the glory of human tradition। मानव ही न्याय धर्म सत्य प्रमाणित करने योग्य इकाई है। Only humans are capable of evidencing justice, dharma and truth। सार्थक संवाद के लिए सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को समाधान रूप में पहचानने के उपरांत न्याय धर्म सत्य ही सार्थक संवाद का आधार बन जाता है। After clearly understanding existence as coexistence, justice, dharma and truth naturally become the basis of meaningful dialogues। ठीक है। तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान जाता है तो हमारे अंदर से अपने आप ही जो है ना, इट नेचुरली happens in us, it occurs in us that the dialogue shift towards न्याय धर्म सत्य, justice, dharma and truth, and we can handle all that because we become progressively clear about all this। We have 10 more minutes. I think we can do this also। This much we can do unless there are any questions which we want to discuss। कुछ प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व
दर्शन ज्ञान दृष्टा पद प्रतिष्ठा का द्योतक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन, ये वाला कॉमा शायद नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगा। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान दृष्टा पद प्रतिष्ठा का द्योतक है। तो नॉलेज ऑफ द होलिस्टिक व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस is an indicator of perceiver plane eminence. Okay, so we want to understand something, we can understand, we can perceive everything. Okay, the realities which can be perceived by senses, sensory organs, and the realities which can be directly perceived by mind, both of them, all of them. So the humans have that potential, so that is the eminence of humans, so that is the perceiver plane eminence. So knowledge of the holistic view of existence, so the one who has understood the whole existence, okay, that is an indication of perceiver plane eminence. Otherwise the potential is there, it is not realized. Now, perceiver plane eminence is the potential was there and it has been realized and the existence has been understood. Okay, so this is an indicator of perceiver plane eminence. जीवन ज्ञान स्व और सर्वस्व को प्रमाणित करने की प्रतिष्ठा है। Knowledge of जीवन is the eminence of evidencing oneself, which is I or self, as well as evidencing everyone and everything. तो जीवन ज्ञान जो क्या है, स्व और सर्वस्व को प्रमाणित करने की प्रतिष्ठा है। नॉलेज ऑफ जीवन इज द एमिनेंस ऑफ एविडेंसिंग oneself as well as evidencing everyone and everything. So existence को समझना और जीवन को समझना, okay, to understand the existence, to understand the जीवन, ये वाली दो चीजें जो है इन दो sentences में, in these two sentences they are said. स्व अपने आप में जीवन इकाई के रूप में प्रतिष्ठा है। आई इन इटसेल्फ इज द एमिनेंस ऑफ जीवन यूनिट, यही चैतन्य इकाई है। दिस इंडीड इज द सेंटिएंट यूनिट, यही गठनपूर्ण परमाणु है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट एटम एंड इज एंडोड विद इनएग्जॉस्टिबल स्ट्रेंथ एंड इनएग्जॉस्टिबल पावर, है ना, यही अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न इकाई है। तो सब चीजों को बोल दिया कि यही है, नाम अलग अलग है, इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट वेज, बट इट इज द सेम रियलिटी which Babaji is trying to explain, which is जीवन। रासायनिक भौतिक वस्तुओं से रचित प्राण कोशा, वो प्राण कोशा से रचित सप्त धातु रचित शरीर जिसमें समृद्ध मेधस तंत्र का होना पाया जाता है, इसको संचालित करते हुए जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। सेल्स विच इज प्राण कोशा, तो प्राण कोशा को बोला सेल्स। ओके, सो द ह्यूमन बॉडी, द एनिमल बॉडी एंड द प्लांट, दे आर मेड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेल्स, इसको बाबा जी प्राण कोशा कह रहे हैं। तो सेल्स आर मेड अप ऑफ फिजिको-केमिकल मटेरियल and human body is made up of cells and comprising of 7 constituents, sapt dhatu. I remember पिछली बारी, मतलब few sessions ago, शिल्पा दीदी found out a word which we used it. I have forgotten that. तो दीदी आप बाद में मेरे को अगर याद करा देंगे तो I'll use that same word so that uniformity and consistency is maintained. या अभी याद हो तो अभी भी बता सकते हैं। नहीं, अभी एकदम याद नहीं आ रहा, I'll just recall it. याद नहीं आ रहा, बाद में बता दीजिए। is made up of cells and comprising of 7 constituent subdhatu in which fully developed nervous system is found. Okay, so this is another thing which Babaji has said, that nervous system is found with the beginning of animal order. So animals also have nervous system, Medhastantra, which is brain. The difference between human brain and animal brain is that the human brain is fully developed nervous system. Okay, so what about animals? So the limitation of animals is
what Babaji has proposed is the Jivan, whether it is running an animal body or whether it is running a human body, the Jivan is same. The limitation comes from the brain or the nervous system. So, so, so the animal brain is not able to completely understand all the signals which are being transmitted from the Jivan. Human brain can understand, can interpret all the signals which are being transmitted from Jivan. So in that sense, human brain is fully developed nervous system or fully developed brain. That is what Babaji has mentioned, proposed, suggested, highlighted, whichever word we want to use, we can use that. So cells are made up of physicochemical material, and human body is made up of cells and comprising of 7 constituents or saptadhatu, in which fully developed nervous system is found to steer such a body, and evidence awakening indeed is the aim of जीवन. इस शरीर को चलाना, संचालित करना और जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है. To drive such a body, to steer such a body, and evidence awakening indeed is the aim of जीवन. इस क्रम में मानव परंपरा सत्य कल्पना, आकांक्षा और सत्य के प्रति आश्वस्त होने का प्रयास मानव कुल में प्रचलित रहे आया. In all this, humankind held on to imagination of truth, aspiration to know the truth, and the assurance that it is something good. So in spite of all the gaps, in spite of all the mystery, all the confusion, the good thing that has happened is that humankind held on to the imagination of truth, aspiration to know the truth, because in all generations, in all geographies, there have been seekers who devoted their lives to know the truth, and the assurance that it is something good. तो इस क्रम में मानव परंपरा सत्य कल्पना, आकांक्षा और सत्य के प्रति आश्वस्त होने का प्रयास मानव कुल में प्रचलित रहे आया. In all this, humankind held on to the imagination of truth, aspiration to know the truth, and the assurance that it is something good. क्रम से आकांक्षाएं विचारों में, विचार तर्क में, तर्क के अनंतर आस्था में प्रवृत्त होता ही आया. Aspirations gave rise to thoughts, thoughts to reasoning, and from reasoning to faith. All this has been going on. तर्क लगाने की कोशिश की, लॉजिक लगाने की कोशिश की, लॉजिक से भी पहुंच नहीं पाए, तो इवेंचुअली जो है फिर वो फेथ बेस्ड, बिलीफ बेस्ड सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो गया. ऑल दिस हैज बीन गोइंग ऑन. ये जो है यहाँ पर आई थिंक वी कैन नाउ close, and we will say we will meet next on 26. ठीक है, so we can spend a few more minutes if there are any questions, any observations. आज जो भी डिस्कस हुआ, please. Bhaiya, if I recall, it is 7 body tissues, if I recall correctly. I'll just check again. हाँ जी, है ना. तो आप एक बार देख लीजिए, मैं भी देखूंगा. अगर कुछ मिलेगा तो मैं इसको जैसे सर्कुलेट करता हूँ बाद में व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, तो मैं इसको करेक्ट करके सर्कुलेट कर दूंगा. भैया ये प्राण कोश जो है, इसको हम लोग सेल ही लेकर चल रहे हैं या फिर टिश्यू है ये? अभी तो सेल लेके चल रहे हैं. अभी आप टिश्यू कह रहे हो तो टिश्यू भी ले सकते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टिश्यू. एक्चुअली टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स. इट्स लाइक सेल का नेक्स्ट स्टेज टिश्यू है. ओके ओके, तो लेट मी सी. यहाँ पर प्राण कोशा की बाबा जी ने सम डेफिनेशन इन परिभाषा संहिता, आई थिंक यू मस्ट हैव गिवन.
भैया गूगल पे लाइफ सेल लिखा हुआ है प्राण कोशा का मतलब गूगल पे। गूगल को नहीं, अच्छा ठीक बाबा है जी ने। ठीक है। प्राण कोशा ऐसे मिल नहीं रहा। ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज वी नो कि ये कुछ है जहां पर एक रेस्पिरेशन एक्टिविटी शुरू हो जाती है, एंड बेस्ड ऑन दैट रेस्पिरेशन मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ है। सेल्स है या टिश्यू है, इसको बाद में देख लेंगे। जी। ठीक है, और बताइए एनीथिंग एल्स? नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते विपुल भाई। आपका शायद नंबर चेंज हो गया भैया, मेरे पास जो था ना आप उस पे ऑनलाइन नजर ही नहीं आ रहे। पुराना क्या नंबर नहीं शायद नजर आ रहा? आपका जो नंबर मेरे पास सेव था ना उस पे आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नजर नहीं आ रहे थे। अरे मैंने कुछ शेयर किया था आपके साथ तो आपने देखा ही नहीं शायद, क्या? या वो नहीं नहीं, नंबर आपका कोई नहीं, चेंज हो देखा था भैया, थोड़ा सा बिजी रह गया। अब आप बोल रहे हो तो मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया था। आई हैव ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम यू, उसको गया। यस यस नंबर यस। वही है। अच्छा आई एम नंबर वही सॉरी, है। आई कुड नॉट रिवर्ट बैक टू यू। हाँ तो मैंने कहा शायद भैया का नंबर चेंज हो गया है। नहीं नहीं, नंबर चलिए वही है। देख लीजिएगा जब नंबर, टाइम मिले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते भैया। एनीथिंग एल्स? See, it's always, I find it interesting, Spencer, that when you are participating in these discussions so seriously and enthusiastically in these meetings, we are mostly aware about our Indian tradition and Indian religious books and whatever is being said. But whatever we discussed today, regarding truth, God, do we find it in let's say in Christianity also something like that? Could you relate that? Are there any comments or references that you can highlight on that? It will be, for us, it will be very educative. Yeah, for sure. I'll just start by saying my mind was not fully focused today. I've been just feeling a little bit tired. I had a very full day, so I haven't been paying as close attention as I would like to, or just not able to really grasp it, as I would like to. But no, I mean, what we went over, what can I say? Yeah, I'm not, I grew up going to church, like a Christian church, which is the most popular religion, I would say, here in Canada. And then I came to know about Indian spiritualism later on, first through Mahendra by here, and then going to India, learning about more there. But it had always also, I had learned about Indian spiritualism through the lens of Madhyas Darshan, which I feel like gives an extra interesting insight, So what I can say is that, yeah, certainly my experience just going to church and growing up and reading the Bible and those things, it seems kind of fundamentally different from the Indians or the Eastern spiritual quest to know the truth. And the truth is like just that whole meditation process is very unique. I mean, the words, now that I think about it, are the same. They talk about God, they talk about truth. So all those things, all those same words are there, but perhaps the meanings are very different. And again, Babaji says it. Yeah, Babaji says it clear here. Like we all then it becomes mystery. We all say that truth is something good, pure, eternal, but then how is that interpreted? It splits up into many different ideas and sects. So what were you saying?
I was just coming to this only mystery. So like the God or the truth, there is something like that. So words have been introduced in tradition in the language, but they are shrouded in mystery. This is what Babaji is saying after whatever he belonged to a Vedic family, and all these things he was hearing and understanding since childhood. But he felt in the end that all these things are shrouded in mystery. And this is what we discussed today also. So can we say that it is true in whatever you are following also, God is the clarity there, or God is still, like when you talk with friends or people, what is God? It still remains shrouded in mystery. Oh yeah, it's full of mystery, and It's full there's of, many yeah. questions which simply have no answers. And again, as a child growing up, I would go to different like summer camps, we have here. So you go for a Yeah. camp, but it was like Christian summer camp, And Okay. so as a kid, I would go every year to these camps, and yeah, some questions, I remember having the question, like, okay, God created the world, but who created God, or how long has he been there? Yes. It wasn't like maybe an original question. I probably heard it from a friend in the camp or something, but I remember trying to think about the answer, and as maybe like 6, 7, 8 years old, and the answer you get is something along the lines of, oh, only God, will know, or that's something we're not supposed to know. So, or similarly, the question always comes up, oh, well, what is heaven like? Because the notion here is that, once you die, if you've accepted, or the notion in Christianity, if you've accepted Jesus, or, if you've done X, Y, Z things, and you don't have so much sins, then you'll go straight to heaven. And so the question is, oh, well, what's it like in heaven? And there it's just very vague, just very general. Oh, well, the roads are paved with gold, and there's a giant mansion, and as many rooms as you want, very materialistic sort of heaven, And so I had asked that question, or heard people ask that question many times growing up. What is heaven like? Because you want to know, like, is all this effort worth it? Like, we're trying to not do sins and be good, faithful and everything. So you want to know, well, what's it like? And just very mysterious answers, and never anything clear. So each person in their mind has their own definition or idea of heaven in the end, of what it's going to look like, so so yeah. And then the concept of God itself fully mysterious. Yeah. So good. So, like I thought that it will be good for all of us to sort of, verify that it is not only in the Indian spiritual context that Babaji is saying that God is mystery, and there are these other things are also there about which we do not know truth. It is a universal gap. It's a universal phenomena. The more we can get these kind of opportunities, so this also is an important aspect in Janvaad, or in conversations, or in dialogues. So we all in our personal lives also get chances to meet people from other belief systems. So it's a good point for meaningful discussions, to understand what is being done in, or what are the beliefs which they are holding, and do they also believe that there are some gaps, or they have the answers. These are good inputs for all of us. I think that this also gives us a point of discussions or dialogues. Yeah, and I'm glad to share, because I know it is very different. Many things are very different over here, so I'm glad to share. And Right. Good. So Spencer, thanks for sharing these views, and we hope that by next
Sunday, the time change will have settled down, and Yes, we'll have your full attention. sure. And thanks everyone for joining. नमस्ते. 26 मार्च को फिर से मिलते हैं. नमस्ते. Namaste. Thank you. Namaskar. Namaste, सभी को. नमस्ते.